Welcome everyone. I am Dr. Ashish Kant Chaudhary. Today's my lecture is Government Scheme for Tribal Entrepreneurship. Government Scheme for Tribal Entrepreneurship ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक पे, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में वी नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉलिसीज एंड अदर फैक्टर्स related to the government scheme for tribal entrepreneurship. And in second lecture, we also covered different types programs or schemes which are launched by the government for the development of the tribal entrepreneurship. And in this lecture, we know about new type schemes for the tribal entrepreneurship related to different aspects, related to education, related to health, related to project, related to research institute. I try to cover every types of the schemes. Those are helpful for the tribal entrepreneurship. First point is pre-matric scholarship schemes for ST students and post-matric scholarship scheme for the ST students. ये एक ऐसा स्कीम्स है जिसमें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एसटी स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं, जिनके अपने कुछ की फीचर्स हैं। प्री मैट्रिक स्टूडेंट्स में 9th 10th के आते हैं और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एबव 10th क्लास से ऊपर के बच्चे आते हैं, जो कि स्कीम हैज प्रमोट हायर एजुकेशन अमंग ट्राइब स्टूडेंट्स एंड रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स बाय कवरिंग देयर ट्यूशन फीस, मेंटेनेंस अलाउंसेज एंड अदर एजुकेशनल। गवर्नमेंट का मेन फोकस है कि जो ड्रॉप आउट है बच्चों का क्लास 8, 9, 10th में, उसको रिड्यूस किया जाए और ये बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने को increasing their enrollment and retention rates in school, because everything is depend on the education. We know that pre-matric and post-matric scholarship scheme for ST students play a crucial role in promoting education and empowering ST communities by providing them with the necessary financial support to their academic activities. क्योंकि बिना इसके हेल्प के अगर हम इसको प्रमोट कर देते हैं दिस स्कीम्स को, तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके बच्चे अपने आप मेन स्ट्रीम्स में आ जाएंगे। और रिम्बर्समेंट ऑफ नॉन रिफंडेबल फीस, इट इज ए आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़। उनका जो फीस जमा भी होता है तो रिफंड हो जाएगा, ये फैसिलिटी भी इस स्कीम में दी गई है। और ये स्कीम्स नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर वहाँ पे बच्चों को रजिस्टर्ड होना पड़ता है और वहाँ से इस स्कीम के थ्रू डायरेक्ट पैसा बच्चे के अकाउंट्स में आता है, जिससे कि वो इस फैसिलिटी को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। स्कॉलरशिप स्कीम, इट इज ए आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स दोज आर enrolled in higher education. First scholarship is National Overseas Scholarship for ST students for studying abroad. It is a government initiative to provide financial assistance to ST students to complete higher education from outside India. The scheme aims to support talented ST students in assessing quality education opportunities abroad, thereby enhancing their skills, knowledge and contributing to their personal and professional development. इसमें गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है जो कि उनके एक्सपेंसेस को कवर करता है, सच एज ट्यूशन फीस, एकोमोडेशन, लिविंग एक्सपेंसेस, ट्रेवल एंड अदर इंसिडेंटल कास्ट एसोसिएटेड विद स्टडिंग अब्रॉड। इट मीन्स अगर यू qualified your essential qualification, you can study for higher education abroad with the help of the financial assistance. It is course covered science, technology, engineering, mathematics, humanities and social science management. Every subject covered under this
schemes. It is eligibility. ST students meeting the eligibility including academic qualification, income limit and other requirements specified by the government are eligible to apply for the scholarship. Another is National Fellowship and Scholarship for Higher Education of ST students. Scholarship for higher education, earlier known as top class for ST student. Fellowship, earlier known as Rajiv Gandhi National Fellowship for the student. Both scholarship schemes are very popular for the ST students. It is also every year government advertise for the scholarship, and it is also fill up form NSP, National Scholarship Portal. National Fellowship and Scholarship for Higher Education. It is a government initiative and main object to providing financial assistance to fulfill higher education at the postgraduate and doctorate level in India as well as abroad. This scheme to promote higher education among tribes students, facilitate their access to quality education and support their academic and professional growth. Overall, both National Overseas Scholarship and National Fellowship and Scholarship for Higher Education of ST students play an important role in providing financial support and opportunity for ST students to fulfill higher education, whether abroad or within the country, thereby contributing to their academic and professional advancement. It is a good initiative taken by the government for the students. Grants in aid to voluntary organization working for welfare of scheduled tribes. It is also very good program. The government of India recognize the crucial role the voluntary organization VO and the non-governmental organization NGO play bridging the gap and reaching remote tribal areas. To support their effort, the Ministry of Tribal Affairs offer a program called Scheme of Grant in Aid to Voluntary Organization वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये तीनों के तीनों मिलकर इस ब्रिजिंग द गैप स्पेशली इन रिमोट ट्राइबल एरियाज, जो रिमोट ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं और वहाँ के वेलफेयर से रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं ताकि वो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ सके। देयर आर द सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट इज द एनहेंस द रीच ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज हाउ वी रीच to the last point for grassroots level point for the scheduled tribes areas. It is also fulfill the gap in service delivery, especially in service deficient tribal areas, because some कुछ areas ऐसे हैं जहाँ पर आज भी वो समाज से आइसोलेटेड हैं, जैसे आप गोरखपुर में देख सकते हैं या नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे एरिया हैं या अंडमान में बहुत सारे एरियाज हैं जो कि सर्विस डिफिशिएंट ट्राइबल एरियाज में आते हैं, जहाँ पे कि पहुँचने में बहुत समय लगता है। तो वहाँ पे इस ग्रांट इन एड टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन प्रयास करता है कि वहाँ पे जाएं और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें। इट इज़ आल्सो हेल्पफुल फॉर द सपोर्ट इंटरवेंशन इन फैक्टर लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट, सोशल सिक्योरिटी and overall socio-economic development of the tribal, especially in central India. Government also try to develop different types programs and different type welfare scheme for the scheduled tribes. Target audience with the help of the voluntary organization, with the help of the NGO and with the help of the Ministry of Tribal Affairs, they try to
covered social welfare initiative for the scheduled tribe area, and these work is done on the basis of the funding provided by the Ministry of Tribal Affairs. They can submit a application and detailed proposal outlining the proposed activities, its objective और टारगेट, बेनिफिशियरी, बजट एंड इम्प्लीमेंटेशन। यानी ये सभी को मिल सकता है, बस उसके लिए आपको जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोसीजर्स हैं उन प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, जिससे कि आप एक प्रपोजल डालिए, उस प्रपोजल के बेसिस पे ये एजेंसी उसको आइडेंटिफाई करती है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स उनको फंड देता है। देयर आर द लॉट ऑफ द बेनिफिट। It is also helpful for the financial assistance from the government, enables NGO to undertake impactful project for ST communities. It is also support in innovative approach for welfare and development. It is have a good collaboration between government and civil or society organization. Development of particularly tribal group PVTG. It is a very important tribal group that is have a priority areas for the government of the India at addressing the unique socio-economic and cultural need of these marginalized communities, also known as primitive tribal group PTG इसको पहले बोला जाता था, and it is are identified based on the pre-agricultural level of technology, are declining population, low literacy rate and subsistence-based economy. It is developed in 2023-24 and it is also developed by the latest government. It is also focused on improving access to education, health and livelihood opportunities. There are the it is any ongoing scheme for providing financial assistance to state government for undertaking development project, and it is have a holistic approach taking into accounting their cultural and social context. It has also focused on tribal sub-plan. We know that tribal sub-plan is the portion of the annual plan of each state, and it is also allocated for tribal development with a share directed towards PVTG based on their population size, because it is focused, it is distributed schemes on the basis of the pre-agriculture level of technology, declining population, low literacy rate and subsistence based economy. So there is some कुछ गवर्नमेंट ने इस टाइप का प्रोग्राम ऐसा डिफाइन किया है जहां पर लो लिटरेसी रेट है, सब्सिस्टेंस बेस्ड इकोनॉमी है, या पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, या जहां पे एग्रीकल्चर का लेवल लो है, उन सारी एरिया को डिफाइन किया जा रहा है और वहाँ पे गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि डेवलपमेंट के लिए स्पेशल फोकस किया जाए, और जहाँ इस टाइप का पोजीशन है वहाँ PVTG ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, बिकॉज इट हैज़ ए इम्पॉर्टेंट फीचर सच एज आइडेंटिफिकेशन एंड रिकग्नाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट। इट इज़ फोकस पॉलिसी इंटरवेंशन कि क्यों ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। इट इज़ केयर on the health care and nutrition. It is also focus on education and skill development. It is livelihood supported. It is also developed housing and infrastructure development, and it is also helpful for the cultural preservation and participatory approaches. These aspects are included, and these aspects are very helpful for in PVTG programs. Uplifting the PVTG program necessitate a multi-schemes approach by addressing their specific and promoting their cultural identity alongside development. The government initiate coupled with community participation can pave the
way for a brighter future for these marginalized communities. Scheme for education among scheduled tribes in low literacy district, जहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की गर्ल्स हैं जिनका लो लिटरेसी से रिलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे ये स्कीम गवर्नमेंट ने टैकल करने का प्रयास किया है. इट इज द क्रिटिकल इशू ऑफ लो लिटरेसी रेट अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स गर्ल्स इन इंडिया. दिस इनिशिएटिव एम्स टू ब्रिज द एजुकेशन गैप एंड एम्पावर द गर्ल्स फॉर ए ब्राइटर फ्यूचर. प्रीवियस स्लाइड में हमने स्कॉलरशिप की बात की थी जहाँ पे गर्ल्स के लिए 50% सीट्स रिजर्व हैं फॉर द एसटी गर्ल्स. सो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में गर्ल्स से रिलेटेड लो लिटरेसी है वहाँ पे ये प्रोग्राम लाने का गवर्नमेंट ने प्रयास किया है. फॉर दिस इट इज गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी टू प्रोवाइड डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेनिंग रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ girls education, and also government try to establish residential schools, established hostel for girls particularly in the remote areas. It is also improve infrastructure, developed and upgrade school infrastructure in tribal areas. Also developed scholarship and initiative, provide different types scholarship and financial assistance to ST girls to cover educational expenses, and it is also offer bridge courses for the girls who have not attended school previously. Teachers training, it is also trained teacher in culturally sensitive pedagogy and addressing the specific needs of the ST girls, and it is also try to involve community participation with the help of the parents and with the help of the community leader in promoting girls education, because governments also know it is the important factors फॉर द एजुकेशन. क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर हम गर्ल्स को एजुकेट कर देंगे तो जो उनकी आने वाली जनरेशन है वो अपने आप एजुकेट हो जाएगी. एंड देयर इज द लॉट ऑफ द एक्सपेक्टेड आउटकम रिलेटेड टू दिस schemes. Increase enrollment and retention of the ST girls in schools, and it is also improve learning outcomes and academic performance. It is also increase awareness about the benefit of girls education within tribal communities, and it is also empowerment of ST girls through education and improved life opportunities. There are the three important key objective of this scheme. With the help of this scheme, increase enrollment and retention class 1 to 8. It is also improve learning outcome already discussed in lecture, and it is empowered because with the help of the education you can promote gender equality through education and equip girls with the tools to reach their fulfill potential. Grants under Article 275 subsection 1 of the Constitution of India. It is very important schemes launched by the government. Article 275 subsection 1 of the Indian Constitution empower the Parliament to provide financial assistance to certain states in the form of grants in for promoting the welfare and development of the scheduled tribe. यानी कुछ स्टेट्स को पार्लियामेंट को एक स्पेशल पावर दिया गया है कि वो उन स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए स्पेशल फंडिंग करें और ताकि वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो उसको अडॉप्ट कर सकें, चूज कर सकें और वो उसको उससे बेनिफिट हो सके. इसके लिए कुछ स्पेशल की पॉइंट्स डाले गए हैं जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड जनरेट किया गया है, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, और इट इज आल्सो डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट विद डिफरेंट allocated with a different sums allocated for the different states, and its responsibility to use this fund for the various initiative like infrastructure development. Infrastructure development in first point is school, road,
health care and facilities, because it is the basic infrastructure of the societies. Education and skill development, it is also very important part. Try to focus, because with the help of these 2 points, they can aware about his life, about his empowerment. It is also helpful for the income generation and livelihood promotion. With promotion of these schemes, there is the lot of the benefit, because if स्कीम के प्रमोशन से बहुत सारे प्रॉफिट हुए हैं, इट इज़ हेल्पफुल फॉर द ब्रिजिंग द गैप, इट इज़ हेल्पफुल फॉर द इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, इट इज़ हेल्पफुल फॉर प्रमोट इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ एंड स्किल डेवलपमेंट, enabling to scheduled tribes to become self-reliant. It is also very helpful for preserving culture, supporting initiatives that safeguard and promote the unique cultural heritage of scheduled tribes communities. For implementation, the Ministry of Tribal Affairs act as a nodal ministry responsible for overseeing the utilization of these grants. Overall, we can say grants under Article 275 subsection 1 play an important role in promoting the welfare and development of scheduled tribes in India. Special Center Assistance to Tribal Sub-Schemes, SCA to TSS. It is a special program. Recently it is changed. वर्तमान समय में इसका नाम बदल दिया गया है. अब इसका नाम हो गया है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, PMAAGY, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना. It was a central government initiative that provided financial assistance to states for the development of tribal communities. और इसको 2021-22 में चेंज किया गया है. इसका प्रीवियस नाम स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब स्कीम था. वर्तमान में अब इसका नाम हो गया है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको चेंज किया था. इट इज हैज ए स्पेशल ऑब्जेक्ट. इट इज ब्रिजिंग द गैप इन डेवलपमेंट फेस्ड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज एंड सप्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट एफर्ट. It has a special provision regarding funding. 100% grant from the government of India, except for grants to north eastern state which are a voted item. यानी इसमें आपको 100% ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलेगा, चार्ज टू बी द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द दिस स्कीम्स. प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का ये सबसे एक स्पेशल है. देयर इज द टारगेट बेनिफिशियरी. किनको टारगेट करके इस प्रोग्राम को बनाया गया है? इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी एरियाज, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एरियाज, मॉडिफाई एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, पॉकेट्स एंड क्लस्टर, एंड पर्टिकुलरली PBTG, particularly Volumbar tribal groups, and last is dispersed tribal population. These 5 areas are target beneficiary of the Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana. Those are a good central government initiative that provided financial assistance to the states for the development of tribal communities, and it has a very good expected outcome during last 3 years, because it provided a high quality research on issue relevant to the tribal development. It is very helpful for the policy recommendation on based on sound research evidence. It is helpful for improve understanding of tribal communities and their needs, and it is very helpful for the capacity building of TRI, Tribal Research Institution, as leading institution for tribal research. Overall, this is a very good program for the tribal societies. Grant in aid to tribal research
institution and support to national state scheduled tribe finance and development। ये दो तरह के पॉइंट्स हैं, एक है कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल एंड शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को किस तरह का सपोर्ट दिया जाए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन रिसर्च डेवलपमेंट। वी नो दैट the crucial role of research in understanding and addressing the challenges faced by tribal communities. To support this, the Ministry of Tribal Affairs offer a program that is known Grant in Aid to Tribal Research Institute and Grant in Aid to Tribal Research Institute program, and another is Support to National and State शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इन सारे प्रोग्रामों के लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि इनको कुछ फंडिंग दिया जाए जिससे ये ट्राइबल कम्युनिटीज से रिलेटेड रिसर्च करें और एक अच्छा परफॉर्मेंस दें, जिसके बेसिस पे इंडिकेट करें कि विच टाइप स्कीम फॉर विच टाइप प्रोजेक्ट फॉर इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्राइबल सोसाइटीज। दीज इंस्टीट्यूट्स बोथ Tribal Research Institute or national and state level Tribe Finance and Development Corporation play an important role, and there is the positive outcomes. It is very helpful for increase access to financial resources for tribal communities, enable them to start and grow business. It is also helpful for the promotion of income generation and economic self-reliance among tribal populations. It is also very helpful and good impact support for skill development and livelihood diversification within tribal communities. On the basis of these research institutions, these cooperative societies, we can say it has play a more significant role in empowering tribal communities and fostering inclusive economic development of the tribal societies. Institutional support for development and marketing of tribal products or tribal produce. It is a very institutional support for development and marketing development product. ISTMTPP. It is a key initiative of Government of India, and it is also implemented by Ministry of Tribal Affairs (MOTA) that aim to empower tribal communities थ्रू बेटर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट। यानी इस इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के द्वारा जो ट्राइबल के प्रोडक्ट हैं या ट्राइबल प्रोड्यूस हैं उनको कैसे मार्केट में लॉन्च किया जाए जिससे कि वो मेन स्ट्रीम में आ सके, मेन मार्केट में जा सके। इट्स हैव 3 important object: enhance income generation with the help of the marketing of their product, increase skill development because providing training program in areas like product design, processing, packaging and marketing to enhance the quality and marketability of the tribal product. Market linkage is also important part of this scheme because it has generated the bridge the gap between tribal producers and national and international market and creating a sustainable market access. Last is it is also helpful for preservation of cultural heritage because with the promotion of this scheme it is promote and protect traditional knowledge and skill associated with the tribal craft and produce. So it is a very good scheme for the development of marketing of tribal products and tribal produce. Minor forest produce through minimum support price and mechanism of marketing of development value chain for MFPP. It is also developed by the Government of India, and this initiative tackle 2 crucial aspects related to minor forest produce and related to the mechanism of marketing development of value chain. It has a important objective. This schemes ensure fair return to tribal gatherers for their MFP collection
ओवरऑल हम ये कह सकते हैं एमएफपी और एमएसपी स्कीम का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम इस स्कीम के द्वारा जो प्रोडक्ट मार्केट में लाएं उसको एक जो उनका मिनिमम प्राइस होना चाहिए उस मिनिमम प्राइस पे उस प्रोडक्ट को बेचा जाए ताकि ट्राइबल कम्युनिटीज के लोगों का उससे नुकसान ना हो। रिसर्च, इंफॉर्मेशन एंड मास एजुकेशन, ट्राइबल फेस्टिवल एंड अदर्स, it is a very good center for those are the collect empowering tribal communities in India require a multi approach that address various aspects of their development. It is also focus on research related information. It is also focus on tribal festivals. It is also focus on mass education. By combining these schemes, research, information, mass education, vibrant tribal festival and other focused development intervention, we can create a comprehensive strategy for empowering tribal communities in India. This approach fosters cultural preservation, promote economic opportunity and pave the way for a more inclusive and equitable societies. और इस स्कीम्स का इम्पोर्टेंस है कि रिसर्च, इनोवेशन एंड मास एजुकेशन एंड ट्राइबल फेस्टिवल्स के जो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को प्रमोट करें ताकि रिसर्च, ट्राइबल फेस्टिवल, रिसर्च, इंफॉर्मेशन एंड मास एजुकेशन से जो रिलेटेड रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल किया जा सके। ओवरऑल वी कैन से बाय कंबाइनिंग these lectures we can create a comprehensive strategy for empowering tribal communities, for empowering tribal entrepreneurship in India. This approach foster a cultural preservation, promote economic opportunity and have a more sustainable entrepreneurship development in tribal society. Thank you.